So hello and welcome to ThePrint. I just finished watching the show, and I love it because I have two cats, and I think for me it was like Yay! watching the struggles of managing two of them. But I sort of wanted to listen to your take, like on personal level, what has the show meant to Mm. you, and if it has changed anything in terms of because even in the show you have characters, and both of your characters evolve and start looking at pets not simply as pets, not just another animal that you're going to get in, but a part of the family. It becomes what we now consider as children, but this was not so earlier. So a general outline, and then I think I'll progress to more on this point questions, I think. I think it has definitely made me sensitive towards animals, aware towards animals, and generally beings who cannot speak. And I think we take our superiority with arrogance. We should take it with a lot of humbleness. I think that's my takeaway from Pet Puraan, and I think it's for good. It's nothing short term. Uh, I think this thought is going to stay with me forever. Okay. मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें बिना अवेयरनेस के मिसअंडरस्टूड करते हैं. तो ये जो एक अभी ट्रेंड आया है कि पेट्स होना जरूरी है या फिर पेट्स होने चाहिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो पेट्स अडॉप्ट करते हैं या फिर बाय करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये उनसे नहीं हो पा रहा और फिर वो अबैंडन कर देते हैं. तो मुझे लगता है कि क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, तो शायद इस वेब सीरीज की वजह से वो एक हो जाएगा कि अवेयरनेस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है. आपको एक कोई चाइल्ड होने से भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आपके पास पेट है तो, और जिनके पास पेट है उन्हें पता ही है कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इर्द गिर्द है, लेकिन उसके बारे में कोई बातें नहीं करता, बोला नहीं जाता. तो आई गेस ये हमारी वेब सीरीज के जरिए हम लोग कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं. नॉट ओनली पेट्स बट देर आर फ्यू मोर पॉइंट्स, जैसे कि ये जो कपल है, ये काफी मॉडर्न कपल है, आज का कपल है जो डिसाइड करता है कि हमने शादी तो की है लेकिन हमें बच्चा नहीं चाहिए. या फिर सोसाइटी के जिस तरह से वो सोसाइटी को टैकल करते हैं, जिस तरह से वो अपने रिलेटिव्स को, अपने मॉम डैड को टैकल करते हैं. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आज के जमाने में काफी रिलेटिव है और रिलेटेबिलिटी है उसमें. Right. Actually, taking on the point of what you said, that this is a very modern couple. But I think for me, I think one of the most relatable points is also that it's not a modern couple that's not relatable, in the sense like it's not an exclusive couple that lives in some, high-rise society, exclusive, I don't know, outfits and everything. So it's actually a very everyday couple, who's also been chased out of one apartment because, they were living in it or marrying, and they are trying to figure out, and, they are also bowing down to family pressure. They are doing jobs. Again, I feel like even the professions that both the characters have, we don't usually, because we do associate a certain gender with a certain profession. I understand that, of course, most number of chefs in our country are male, yes, but immediately agar koi ek middle class family koi bolega ki, my son, and which is something that the show also keeps looking at, and the parent constantly says, that element. So I wanted to know your take on also this. Yeah. और एक पॉइंट है कि वो भी सही नहीं है. बहुत बार ऐसा होता है कि वो खुद को भी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और बोलते हैं यार हम लोग ऐसा सोच रहे थे, हम लोग खुद ने ऐसी शादी की यार, हम लोगों ने ऐसा किया, हम लोगों ने वैसा किया, और हम लोग खुद चाहते थे कि हमें इसी तरह का पेट चाहिए, यही चाहिए, वही चाहिए. तो ये भी है कि ऐसा नहीं है कि ये अगर लीड है तो ये सही है. Right. तो वो अपने आप में भी कमेंट कर रहे हैं. तो ये भी मुझे लगता है कि काफी ये रियलिटी है, ये हमारी रियलिटी है. तो that's it. I mean, I was actually going for that. There's a level of
सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, जहाँ आप 2 मिनट रुक के ये सोच रहे हो, अच्छा हम भी कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी कर रहे हैं कि हमें इस टाइप का पेट चाहिए या इस टाइप की लाइफ चाहिए कहीं ना कहीं. So I was wondering, apart from just pets, what was the feeling like negotiating this kind of roles जो बहुत easily नहीं देखने को मिलता. ठीक है, I understand कि OTT platforms या generally थोड़े बहुत ऐसे couples हमें फिर भी दिखते हैं movies में, but in general this is still, I feel like, a fairly unusual couple, something that नहीं usually represent होता है. A couple that's choosing to marry intercaste, a couple that's choosing to live in before deciding to marry, a couple that's also choosing not to have children, जो कि beginning of the episode, मतलब पहले उससे शुरू होता है. And then of course your character Lalit, which is also trying to tell the other person that are you bowing down to the pressure now? The fact that you want to suddenly have a baby, is it because, you know, everybody around you either has a baby or is telling you to have a baby? So what is your take on that, and how humor is such a big part of the show? Like all of these is not like big serious moments where you're just sad about everything, you know, like there's such humor and lightheartedness with it. मुझे लगता है ये बहुत सारी चीजें हमारे जो डायरेक्टर है, निर्देशक है, ज्ञानेश, जिन्होंने ये वेब सीरीज लिखी भी है, उनसे आया है, क्योंकि ये बहुत पर्सनल लाइफ पे, ये बहुत सारी चीजें उनके पर्सनल लाइफ से आई हुई है. अच्छा. उनके पास पेट है, उनके पास एक बिल्ली है, अभी 2 बिल्लियां है. एक्चुअली जो वेब सीरीज में जो बकू है वो भी अभी वेब सीरीज के पास उन्हीं के पास रहती है. तो उनकी भी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ डिसीजंस लिए हैं. तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें, और हमारे जो दोस्त हैं, नजदीकी लोग हैं, तो हम लोग जितने सारे लोग हैं उनमें से बहुत लोगों ने यही डिसीजन लिया है. जो हम लोग वेब सीरीज में कह रहे हैं, जो सारे बातें हम लोग बोल रहे हैं, वही बातें हमारे आजू बाजू हम लोग देख रहे हैं. तो मुझे लगता है कि वही सब इंस्पिरेशन वहीं से आया है. और रही बात ह्यूमर की, तो वो मुझे लगता है कि वो भी ज्ञानेश के कैरेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा है. तो और ये बातें भी ऐसी है कि अगर हम लोग उसे बहुत सीरियस करके अगर बताते ना, तो लोग वो हजम नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्हें बोल रहे हैं. ये कोई रोज की बात नहीं है. हम लोग ये देखने को नहीं, हमें ये देखने को नहीं मिलता कि ये कपल है वो बोल रहे हैं कि नहीं हमें बच्चा नहीं चाहिए. हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं अभी हम लोग पेट ही अडॉप्ट करेंगे. तो हम लोग पहले ही बहुत एक्सट्रीम चीजें बोल रहे हैं. उसमें भी अगर हम लोग वो सीरियसली अगर बोलेंगे तो मुझे लगता है कि लोग बैकफुट पे ही चले जाएंगे. तो अगर हम लोग ह्यूमर के साथ अगर उसे बताने की कोशिश करेंगे तो शायद वो उसे हजम भी कर पाएंगे, उसे समझ भी पाएंगे. तो ये टेक था उसके पीछे. Sure. So would you like to add? I think the point that you mentioned, that you don't get to see or play such characters very often, I think that precisely what pulled both of us to the script. And I have worked with Dnyanesh, so I adore him as a director. I think he is a wonderful director. He is today's director. He is today's generation also. And yes, the lot of quirk that you see, the relatability that you are speaking about, is everything is Dnyanesh. So I'm now coming to the idea that, again, so I'm here in Delhi, and it does happen a lot that a lot of content, I wouldn't say most, of course, on OTT platforms now have slowly pulled in every single language in India. It is no longer just a primacy of Hindi that's just there, right? Subtitles have become, like, I feel like this is, Parasite's director going like, if you can go beyond those subtitles, and that's where you find actual action and actual drama coming in. That's when you actually experience cinema or entertainment at its best. So again, I have watched obviously on subtitles, except for obviously a few lines that I could figure out. I was just wondering, do you think like shows like this, the fact that I watched straight 6 episodes, not because I have to do this interview, but because again it was something that every episode I was waiting, okay, what happens next? Do they find the perfect fit? So do you think there's also this kind of democratization that has happened, that now finally content has gotten its due place, and it has gotten its due place beyond language, and probably more because we have platforms that can show us, like, say, in episodic form, I think. Because in a film, again, it becomes a 3-hour, 2-hour thing where, you have to go and sit. This is something I can watch like with my own time.
I mean, I was just wondering. I mean, it's fine either way if you had anything to say on that. आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया कि हमें एक्सपोजर काफी अच्छा मिला. तो जो आपने अभी बताया कि मतलब पैरासाइट है, मतलब कोई भी किसी भी लैंग्वेज की फिल्में हो या फिर वेब सीरीज हो, हम लोग अभी देख पाते हैं. और लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो आदत नहीं थी कि सबटाइटल्स से हम लोग किसी भी लैंग्वेज का सिनेमा या फिर वेब सीरीज हो, कोई भी कंटेंट को हम लोग देख सकते हैं, उसकी कहीं कहीं आदत लग गई. और ये बहुत अच्छी बात है. तो अभी कोई भी रीजनल कंटेंट वो सिर्फ उस रीजन का नहीं रहा. जी. सो जैसे हमारी वेब सीरीज अभी ये 6 लैंग्वेजेस में डब हुई है. शांति क्रांति इससे पहले की थी सोनी लिव ने, वो भी 5 लैंग्वेजेस में डब की गई थी. तो वो अभी साउथ में भी दिखाई जाती है. तो अलग अलग नॉर्थ में भी देख सकते हो, तो कहीं पे भी आप देख सकते हो. तो अभी मुझे लगता है कि वो बैरियर नहीं रहा है लैंग्वेज का. तो अभी कंटेंट ही है आपके पास जो आप दिखा सकते हो. क्योंकि अगर मैं देख सकता हूँ कि कोरियन ये फिल्म है या फिर इंग्लिश हो या फिर किसी भी लैंग्वेज की फिल्म हो, अगर मुझे कंटेंट अगर बाहर से मिल रहा है तो मुझे मेहनत करके अलग ही कंटेंट तैयार करना पड़ेगा. क्योंकि कंटेंट इज देयर, ओनली लैंग्वेज इज डिफरेंट. तो अगर मुझे अपने लैंग्वेज में भी कुछ तैयार करना है कंटेंट, तो कंटेंट मुझे अलग ही तैयार करना पड़ेगा क्योंकि बाकी तो अवेलेबल है. So that's why I think our web series is different because वैसा कोई भी कंटेंट नहीं है अभी, ना हिंदी में ना किसी रीजनल लैंग्वेज में. आपने देखा होगा कि पेट्स को लेके, पेट पेरेंटिंग को लेके ऐसा कोई कंटेंट आपने किसी ने बनाने की कोशिश की हो. Which is precisely something that I was thinking, that this idea जो आपके शो में है, which is about choosing not to have children. I think, you know, how the parents of the characters react, I think they're still reacting in a more rational manner than a lot of other parents they probably would. I'm sure. You know, the moment you say that I don't want to marry, there's a certain kind of reaction, you know. I don't want to have kids, there's a certain kind of reaction, right? So I was wondering how, I mean, I feel like there's a show that would probably actually begin this kind of discussion where, you know, couples who are young, who are probably struggling to say that, okay, you know, we don't want kids. Because there's a line that I think Lalit's characters, both of you have a discussion where you ask Lalit's character that, but you like kids. And then Lalit's character says that, you know, liking kids does not mean, you know, I am willing to take on the responsibility of raising a child. For me, that was a very, very important line in that moment, because I feel like that is what actually is also forms a lot of the show. That, you know, just because you like doing something, just because everybody else is doing it, you know, in the show, including your character's sister, who's, you know, pregnant and then saying, and then you have a moment of, you know, being very upset about, you know, when somebody says, you know, I am responsible, I took care of you. How often children is, you know, equated. So I was thinking, how, if you feel like this is a show that could actually start these discussions for a lot of couples who probably might finally realize, okay, you know, it's because films across whatever the world, sometimes it's the first thing you look at and say, okay, मेरी life ऐसी है, या मैं भी ऐसे feel करता हूँ या करती हूँ, and okay, this is right. Because I feel like that, you know, specifically for, I think, smaller towns, you know, smaller pockets of India, जहाँ अगर आप थोड़े से so called हटके हो या different हो और आपके पास कोई क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क नहीं है, तो फिल्म्स कहीं ना कहीं वो फ्रेमवर्क होते हैं जहाँ आपको देख के आप बोलते हो कि हाँ, you know, this is me. You know, I also feel like this show could also be the starting point of similar kind of discussions. We will be very happy if it is. See, I think that's the beauty of any show or a film. You do not, you cannot assume what it's going to start, or you cannot assume what line is going to hit, which line is going to hit which audience, or which, you know, it's so unpredictable. And I think that's the beauty of it. And I don't know if Dnyanesh had this in mind deliberately to, you know, sort of put these seeds. But if that is the purpose, then I think we are on the right paths. Because you as a viewer think that this might start a discussion. Where will it go? What will come out of it are the questions of tomorrow. But yes, I think if it starts a conversation about this whole thing, even about adopting pets and not buying them,
we as a part of this project would be really proud. मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, जो आपने बताया ना कि एक दूसरे को सिर्फ कई सालों से कोई चीजें चली आ रही है, वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं. कोई क्वेश्चन ही नहीं उठाता. तो सवाल खड़े होने चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्या किसी भी सिस्टम के ऊपर, फिर वो फैमिली की सिस्टम हो, मैरिज सिस्टम हो, एनी सिस्टम. तो मुझे लगता है कि वो इस वेब सीरीज में किया गया है ह्यूमर के ही तौर पे, लेकिन वो चीजें की गई है. हम लोगों ने वो जो डिसीजन लिया है, लेकिन उसके पहले ये भी डिसीजन हम लोगों ने लिया और वो मैरिज भी हम लोगों ने किया है कि हम लोग एक ही रिलीजन से नहीं है, मतलब हम लोग अलग अलग जाति से हैं. तो हमें मैरिज के समय पे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, तो वो भी पॉइंट है उसमें. तो ऐसी बहुत सारी चीजें, तो मुझे लगता है कि वही हो रहा है कि हम लोग सिर्फ फॉलो करते जाते हैं जो कुछ हमारे रिचुअल्स है या फिर चीजें हैं. सवाल खड़े होने चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है. तो अगर इस वेब सीरीज से या फिर किसी भी कला से या फिर ऐसे कंटेंट से अगर सवाल खड़े होते हैं, सवाल आप पूछेंगे एक दूसरे से, तो अच्छी बात ही है. Okay. I just wanted to know individually, what was your most challenging scene with pets in the, in the show, and what was your most fun scene maybe to shoot, or also were the schedules arranged as per how the pets, the animals are going to respond to you, or in terms of yours alone? अरे यार, हर एक दिन एक्चुअली, हर एक सीन हमारे लिए वैसे ही चैलेंजिंग था. और ऐसा कोई भी सीन नहीं है जो हम लोगों ने जैसे सोचा था वैसे हम लोगों ने किया जो पेट्स के साथ था. कुछ भी नहीं. वो इतने बढ़िया एक्टर्स है, वो हमेशा कुछ भी इम्प्रोवाइज करते थे और हमें उनके साथ इम्प्रोवाइजेशंस, मतलब हम लोग वही कर रहे थे. लेकिन वो इतना रिफ्रेशिंग था एज एन एक्टर फॉर अस कि बहुत सारी चीजें अनलर्न हो रही थी उनके साथ, बहुत सारी चीजें हम लोग सीख रहे थे. उनके जैसे हम लोग वो स्केड्यूल चेंज करना पड़ता था. ये सही बात है, क्योंकि आप लोग उन्हें नहीं बोल सकते कि यार बस 2 मिनट और, बस हो गया. वो नहीं समझ पाते ये बात. वो अगर उनका मूड चला गया तो चला गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे. तो फिर वो चले जाते हैं, या फिर वो अगर नहीं है अभी वो अगर उन्हें भूख लगी है, अगर उन्हें खाना है तो उन्हें खाना है. तो उन्हीं के हिसाब से चल रहा था. उसके लिए ज्ञानेश ने बहुत अच्छी बात की थी. हमारे सारे डिपार्टमेंट में जो सारे लोग थे वो सारे पेट लवर थे, या फिर हर किसी के पास कोई ना कोई, हाँ, पेट पेरेंट्स थे. तो सबको वो एक अवेयरनेस था, सबको वो एक बात पता थी कि अगर पेट है सेट पे तो हमें कैसे बिहेव करना है. तो सारे लोग उसी तरह से बिहेव करते थे. सपोर्टिव था काफी हमारा क्रू, तो उससे काफी मदद हुई. लेकिन ये बात तो है यार कि उनके साथ काम करना, मतलब ये हमेशा याद रहेगा. एक ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन मैं शायद सोचने की कोशिश करता हूँ शेफ कोई अगर सीन. I think I like the scene between Baku and Atul. Atul is supposed to take her for the vaccination, and before that he's having a conversation with her, and he said something and she did, and it just added to the whole scene, and the whole scenario just changed, and they just kept exchanging words like that. So that was so magical. अब वो आपने देखा ही होगा वो सीन, जो मैं उसको बोलता हूँ कि लेके जाना है, अकेले जाना है, फिर वो बोलते हैं मैं आऊँ, अकेले जाना है. तो मैं मेरे हर लाइन के बाद वो सामने से रिस्पॉन्ड कर रही थी. तो वो ऐसे ही हो रहा था कि हम लोग जैसे बात ही कर रहे हैं एक दूसरे से. I think my favorite was also when you get a dream and then there are cats in the pantry. Yeah. 4 and 5. I'm like, for me this would be fantasy, but for somebody it's a nightmare going on. Just closing questions. Would you? I mean, you both said that it has been a different kind of learning experience working with animals closely. So what was the one biggest takeaway that you would say? I mean, you've already mentioned that the idea that sensitivity towards animals, something that I think we all are, by and large we are. It's not like generally people are unkind. But have you decided on something that has been life-changing for after the show in any way, any manner possible?
इनोसेंस जो मतलब उनके साथ काम करने के बाद जो मुझे सबसे ज्यादा चीज हिट हुई वो थी इनोसेंस, क्योंकि एक्टर करके भी और एज अ पर्सन भी आपको मुझे लगता है कि उस चीज को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, जो धीरे धीरे ये इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में या फिर भागम दौड़ में कहीं थोड़ी साइड में चली जाती है। तो वो चीज थी इनोसेंस जो उनके पास भर भर के थी। और मुझे लगता है कि एक्टर हो कर मतलब एक्टर के लिए भी वो काफी जरूरी चीज है टू परफॉर्म, टू एक इनोसेंस आपके पास होना। तो sure. I think for me, I had heard about unconditional love, but I had never experienced it so closely. And I think getting loved by somebody without any agenda, without any purpose, without anything, in fact, is something I cannot even imagine in this world today, and that was something that I can never forget. Thank you so much for talking to me. Thank you Thank so you. Thank you much. so much. This was fun.